Hello aspirants, and welcome to a new series for working professionals. This is going to be useful not only for working professionals, for others as well. In this series, I am going to try and cover all the quant topics from absolute zero to the highest level possible in terms of content and in terms of quality of questions. I am Hitesh Hariramani. This is our first session. This is our first session. We are calling it Percentages Basics Episode 01. These are going to be half an hour sessions daily from 7 o'clock to 7:30 daily. Saturdays I will be taking weekly off, so that will be from Sunday till Friday. Saturdays we will be having a off. In these sessions, I'll start from absolute zero of theory, and slowly as we progress, I'll raise the level of content. I'll be trying to cover as many methods as I can, but to get a true feeling of CAT preparation, I'll still suggest you to get onto Unacademy for live learning. Some quick announcements here. Iconic CAT is a product that we are running this year, something new. In this, you are getting all the benefits of Plus subscription. What is Plus subscription? I'll tell you in a minute or so. All the benefits of Plus are included. And above that, you get mentored by IIM Bangalore, Ahmedabad and Calcutta pass-outs. You get to learn tips and tricks from IIM ABC pass-outs who have done this, who have achieved something in life. They are going to train and mentor you. You're going to get personal mentorship, how many hours to study, how many questions to solve, which books to follow. Test analysis and reports. If you appear a mock, you score less, these guys will mentor you. Why your score was low? What can be done to improve your score? Other management entrance test related preparation will also be provided by these guys. These students have studied with Unacademy live for a year or so and have done beautifully well in CAT. See, Shivam managed 99.98 percentile, 99.96 percentile Aditya Gupta, Yatharth 99.91, 99.59 Arkadeep, Anushka Biswas 99.55, 99.5. For every one of these students has scored 99% and above. It could be you with us if you study with Unacademy and study well, guys. Study well. Iconic, if you go with this product, if you want to purchase the subscription, use my code HURRY.H or you can use HitCat.YT. Both codes are active, whichever suits you, go with the one. Ask Around feature now is available for everyone, whether you're a paid subscriber or somebody who is learning for free on Unacademy. You can use this particular tool. First thing, you will have to download the app from App Store or Play Store, and once you download it, you'll have to create an account and activate that account. Use my code HitCat.YT. Yes, even if you are using the product for free, you will have to activate the account and you will need a code for that. You can use HitCat.YT or you can use Hurry.H to activate your account. Some rules are there. First, the image must be clear, whatever question you are sending. Right now, we are accepting questions on quant and reasoning only. Question image should be clear. If there are answer options, the image of answer option should also be there. Furthermore, one question at a time. One question you send it to us, we'll solve and give you the solution video. You can send us another question later on. Those of you who are serious but are looking for heavy discounts, you can do that by performing well here. Unacademy Combat now is a weekly scholarship test. Every Sunday we are going to conduct tests for you. The last test was on 28th February, the next will be on 7th of March. 12 PM is the time. You are getting questions created by our best educators. You are getting analysis video by our best educators. You are competing with thousands of other aspirants. The rank is going to be live. If you perform well in one question, you can see your rank improving. If you fail to answer the question correctly, your rank will go down live. That is the beauty of the Unacademy Combat. Everything is live.
You don't get this kind of feeling. Hello, good afternoon, good evening. You don't get this kind of feeling when you appear even a live exam. You get results a month or maybe 40 days later on. Here you can see your results live. So you will have to again use an unlock code for this kind of event. Use my code hitcat.yt, or you can also use hari.h as the code. About myself, every session guys is mandatory to introduce yourself. I do it in some detail. I'm Hitesh Hariramani. I have been teaching students, aspirants since 2008. That is about 13 years by now. And I used to train faculties from 2016 till the end of last year. That's about 5 years of training faculties in the industry. Not freshers, people with 3 years and 4 years of experience I used to train them. I have worked with Career Forum, IMS, I have worked with Takshila, Time, Business Mentors, Career Launchers. I have worked with all these players. I have learned a lot of things from them. I have solved their mocks, their books, their class sheet, their workshops. I have helped some of them with the design of their books, content. For one of these players, I have taken workshops on city level, national level. I have trained their faculties for Nagpur, Pune, Ahmedabad, and Nasik. I have trained their faculties for. See, methods that I share are the methods I use in these exams, and if I'm able to score this well, there is no reason you cannot score better. Whatever methods I have learned over 13 years of teaching and training, I am sharing those methods with you. Improvise a little bit on those methods, apply these methods well, and you can also score 99.97, 99.96, 99.9. I have scored twice in CAT, 99.5. I have scored thrice in CAT. Overall, also, these are overall CAT percentiles. I have a couple of more results like this. So, you can do it because you are getting the same method that I apply. Now, about this entire series. Today we are going to have some introduction to percentages, but a percentage basics alone. I have allotted so far 8 sessions for percentage basics alone. I'll be meeting you from Sunday till Friday. Saturdays are going to be off. I'll be sharing with you theory. I'll be sharing with you examples. I'll be giving you periodic tests. If you are looking for more guidance, join this Telegram group. Hari_Hitesh. On Telegram, search this group. If you are using a browser, t.me/hari_Hitesh is the link you can follow. So let us start with basic theory of percentages. As the name suggests, per means out of, per means comparison. So out of what? Percent. The French word cent for 100. So anytime or every time if something is calculated out of 100, we can call it a percentage. If I say some child got 20 marks out of 100, that is basically 20%. If I say some child got a score of 15 out of 50, now this is not 100. So if I make it double, this person has got 30 out of 100. That is 30% marks. Out of 100 is a percentage. If it is not out of 100, we can convert that into a percentage by some basic calculation. So let me cover some basics here. When we say X percentage, we simply say the symbol means upon 100. If I say 20%, I mean 20 upon 100. If I say 30%, I mean 30 upon 100. Absolute basic, percentage out of 100. Percentages are used to normalize calculations. If I say a child A has scored 30 marks and a child B has scored, let us say, 50 marks. Who has scored more? Who has scored more? You can clearly say the marks of child B are more than A. Absolute value, B is more than A. But if I rephrase this, and if I ask you, who has done better in the exam?
Who is doing better in the exam? कौन अच्छा perform कर रहा है in the exam? You cannot tell me this. Why? 30 marks किस में से? Out of what? 50 marks किस में से? We do not know. So I will have to give you more hints. Out of let us say 80 marks. Out of let us say random numbers. Let us say out of 200 marks. So who has done better? So for establishing the comparison of growth or comparison of performance between individuals, percentage theory was designed, or percentage theory is used. This is out of 80, this is out of 200. As a base, I have no way to compare them. So what do? We say 30 out of 80 multiplied by 100. That is the percentage calculation. This is gone, this is gone. I'll do this manually for you right now. 4 into 2, 4 into 25, so that is 75. 3 into 25 is 75. 75 by 2 is 37.5 percentages. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आई शो यू ट्रिकी मेथड्स टू कैलकुलेट दीज फास्टर. अभी बहुत बेसिक कर रहे हैं. How much has B scored? B has scored 50 out of 200 into 100, so gone 25%. So but as a value, if you ask me, A has done poor or B has done better. But as a percentage, if you ask me, A has managed to score 37.5 percentages. B has managed to score 25 percentages. A has done much better than B. So percentages are comparisons. Percentages are based on 100. So out of 100 we calculate the performances. That is the idea of percentages, guys. So I want you to copy this down. This is the comparison between two values. B has scored more, but as a percentage, out of 100, A has done much better. Everything I cover will be from absolute zero. First, I started for you with the definition of percentage. Even if you are not targeting CAT, you are targeting some other exam. But the fundamentals are same for every exam. So start copying what is on the screen. I crack this joke a lot of times in my classes. It is very relevant. The more notes you make now, the more notes you might make later on after getting into a good college. Notes lead to notes. Notes banao, copy karo. I'll give you half a minute to copy this down. The definition of percent means per 100, out of 100 on the screen for you. Then I went after telling you, अगर 100 का base नहीं भी है, even if it is not 100, it is let us say base 50, double कर देंगे ना. I'll show you such tips and tricks more. You can tell your friends also the new series we are going to cover. Look at this. This is the new series. Working Professional Strategy, Basics of Percentages, episode 01. I have assigned 8 lectures total for percentage basics only. बड़े आराम से करेंगे बेटा. I am in no hurry. ये चलता रहेगा अभी कोर्स आपका. Day after day, week after week. Saturdays I will be taking off. Saturdays I will not be live for you on YouTube. Rest of the days, every day I'll be live for you from 7 o'clock to 7:30. चलो. What have we talked about? Percentage क्या होता है? Some calculations on percentages. Growth rate होता है बाद में we'll see. And a comparison established through percentages. Some basic calculations that involve percentages. If I give you two numbers, if I give you one number as X and one number as Y, what are the kind of calculations you and I can perform on X and Y relating percentages? I might ask you, X is what percent of Y? I might ask you, Y is what percent of X? Very elementary stuff. So, beta, whatever comes after of, that is the base. After of जो आएगा वो base है. It will be in the denominator. वो नीचे होगा. So beta, here the calculation would be X out of Y into 100. This is the answer to the question. X is what percent of Y. Similarly, if I ask you, Y is what percent of X.
सो बेटा ऑफ के बाद क्या, x विल बी बिलो, y विल बी अबव इनटू 100। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, ये सीरीज आपकी चलती रहेगी आगे भी। आज परसेंटेज शुरू किया है, आई थिंक फॉर 1.5 वीक परसेंटेज बेसिक्स करेंगे, देन वी विल चेंज द थीम टू हायर लेवल परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, चेन रूल, सक्सेसिव चेन, बहुत पढ़ेंगे अभी। थर्ड, what kind of calculations can I ask you for x and y as values? Third, please follow this. I might ask you x is how many percentage less than y, or I might ask you y is how many percentage more than x. Very elementary stuff. So first, to answer this more and less part, कम और ज़्यादा आंसर करने के लिए what you must do is you must first find out the gap between x and y, because I want to know x कितना less है, तो obviously बात है x की वैल्यू कम होनी चाहिए, so we perform y minus x. This calculation tells me कम कितना है, less कितना है, when divided by the base. then के बाद किसका नाम लिखा है बेटा, then के बाद किसका नाम लिखा है, y का, so upon y into 100 is what we are looking for. परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं between x and y. अब अगर आपसे पूछा जाए y is how many percentage more, that means y ज़्यादा है then x, तो बेटा x will be in the base, whatever comes after then is the base, उसके ऊपर कैलकुलेशन होगा, तो आपको गैप तो निकालना ही पड़ेगा into 100. बेटा these are the 4 standard calculation involving any two numbers given. I can assure you one thing, परसेंटेज का अगर सवाल है, if I don't consider SICI, बेटा इस 4 कैलकुलेशन के बाहर कुछ नहीं होता, सारे क्वेश्चन एट द एंड इसी में कन्वर्ट होंगे, a upon b into 100, b upon a into 100, b minus a upon a into 100, a minus b upon b into 100. तो यही 4 कैलकुलेशन ही ब्रह्मांड है परसेंटेज का. लिख लो, I'll give you a minute. आगे से सेशंस में आपके लिए मैं क्वेश्चंस भी डालूंगा, क्वेश्चंस भी लाइव सॉल्व करेंगे. देखो जो आउटपुट हमारी अनअकैडमी लाइव पे आती है बेटा, वो यूट्यूब पे क्यों नहीं आ सकती, आई विल गिव यू कपल ऑफ रीजंस. वहाँ पे इंटरफेस बेटर डिजाइन्ड है ओनली फॉर टीचिंग. फर्दरमोर क्वेश्चन देके आई कैन गिव यू एज अ क्विज, 30 सेकेंड्स का टाइमर लगा दिया, पोल ऑप्शन दे दिए, 6 सेकेंड्स का टाइमर लगा दिया, पोल ऑप्शन दिया. यूट्यूब पे अभी ये पॉसिबल नहीं है. इफ यू आर लुकिंग फॉर बेटर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, बेटा ये प्रोफाइल आप फॉलो करो, अनअकैडमी डाउनलोड करो बेटा, ऐप पे प्रोफाइल बनाओ और मेरी प्रोफाइल आप फॉलो करो, unacademy.com/@hurry.h. बेनिफिट ये होगा बेटा, ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल पे अगर आप जाओगे ना, तो आपको ना 65+ आवर का फ्री सेशंस है बेटा. इतने टाइम में आई हैव सीन जो कोचिंग क्लासेस होते हैं, रीजनल लोकल जो भी होते हैं, वो पूरा क्वांट खत्म कर देते हैं बेटा इतने में. आई हैव वर्कड विद न्यूमरस प्लेयर्स, आई रिमेंबर गेटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम टॉप डाउन कि बस हितेश कुछ भी करो, 60 घंटे में सिलेबस पूरा करो, द स्टूडेंट मस्ट नॉट फील कुछ छूट गया है. तो बेटा वो फीलिंग वाली बातें होती है, वहाँ पे मोस्टली ये केयर नहीं होती, कवर करना है, रिपीट करना है, रिवाइज करना है, वर्कशॉप्स भी आधे अधूरे, कोई बात नहीं. आप अनअकैडमी पे आओ बेटा, unacademy.com/@hurry.h पे जाओ और आप देखो कितना कंटेंट है वहाँ पे. बहुत चीज़ें बेटा मैथ्स में पढ़ने के लिए, बहुत चीज़ें मैथ्स में पढ़ने के लिए. तो मैं आपको एक ना लूप होल दिखाता हूँ जो बच्चों का लर्निंग में रहता है. आपको भी हो सकता है इस तरह का लूप होल. लूप होल किसे कहते हैं, हमें लगता है हमें आता है लेकिन वो छोटी मिस्टेक रह जाती है, लर्निंग गैप्स कहते हैं. If I give you x is equal to let us say 120 and if I give you let us say y is equal to 150, छोटे नंबर है, आसान नंबर है. I want you to calculate these 4 things for these 2 numbers. और आप मुझे आंसर के फॉर्म में दे सकते हैं.
मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए। x इज इक्वल टू 120 और y इज इक्वल टू 150 के लिए आप मुझे ये 4 कैलकुलेशंस करके दो। आई विल राइट हियर योर आंसर्स। बेटा यू कैन कम्युनिकेट विथ मी थ्रू यूट्यूब लाइव चैट फीचर, बिकॉज मैं लैपटॉप पे भी लाइव हूँ और मोबाइल फोन पे मैं लाइव हूँ आपके लिए। सो कैन कम्युनिकेट विथ मी इन दैट वे ऑल्सो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रिपीट सर, आंसर आ गया तो आप टाइप करके सेंड कर दो। आई टेल यू सही है गलत है चेंज करना है। एजुकेशन गाइस इज वेरी कम्युनिकेटिव बिजनेस। कम्युनिकेट करना है आपको, ये नहीं सर को करने दो, सर को पढ़ा लेंगे। 1 मिनट आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू गाइस। बेटा मैं लगभग हर साल 99 परसेंटाइल प्लस ले आता हूँ। पिछले 4 साल से 99.9 परसेंटाइल प्लस ला रहा हूँ क्वांट में। तो जो मेरे खुद के मेथड है वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेथड स्पीड वाले रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, आप सीखो, अप्लाई करो। मैं खुद भी आपको मोटिवेट करता रहूंगा, मेंटेन पेस, स्पीड बढ़ाओ। रेशियो मेथड क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन अप्रोच करता है, सब जगह आपको मैं। अभी जैसे मुझे पहला कैलकुलेशन चाहिए बेटा x अपॉन y इंटू 100, तो आपने पहले इनको यहाँ लिखोगे 120 अपॉन 150 इंटू 100। प्रैक्टिस नहीं लिखो, कोई इशू नहीं बेटा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो गई ना, ये सब लिखना नहीं है, सीधे आपने यहीं पे डिवाइड कर दो। मेरे को दिख रहा है बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 30, ये 4 है तो ये 5 है, ये 4 है तो ये 5 है, कैंसिल कैंसिल 20 इंटू 4 80%। सो x इज 80% ऑफ y। सीधे सीधे x इज 80% ऑफ y। अब अगर बेटा ये 4 अपॉन 5 है और अगला मैं y अपॉन x पूछ रहा हूँ, दोबारा क्यों लिखें, आप भी क्यों लिखोगे, ये 4 बाय 5 है तो ये 5 बाय 4 होगा इंटू 100, तो ये कैंसिल 25 टाइम्स, 25 इंटू 5 बाय 25। धीरे धीरे स्पीड आएगी, अगर आप बहुत टाइम से मैथ्स के टच में नहीं है, स्पीड आएगी, डोंट वरी, करवा देंगे सॉल्व, डोंट वरी। अभी देखो अगला है y माइनस एक्स अपॉन वाई। यहाँ आंसर कर रहे हैं x कितना छोटा है y से, हाउ मच इज x लेस देन y। बेटा जब इन दोनों को माइनस करेंगे आपस में तो x जो है 30 यूनिट्स लेस है y से, 30 यूनिट्स कम है y से। हाउ मच इज y, y इज इक्वल टू 150 इंटू 100। तो ये कैंसिल आपका 1/5 आ गया, 1/5 into 100 is 20%. If I put that information here, तो y कितना ज्यादा है x से 30, then क्या है, then x है बेटा, तो denominator will be 120 into 100। तो ये बेसिकली 1/4 ही है ना, ये 1/4 है, 1/4 into 100 is 25%। अब जो मैं लर्निंग गैप की बात कर रहा था वो ये बेटा, ये प्रॉफिट लॉस में बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, आपको समझाता हूँ ध्यान पे। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो वैल्यू ऑफ x है वो y से 20% कम है, तो लोग क्या कह देंगे, आप भी जल्दबाजी में बेटा यही कहोगे कि जो y है वो 20% मोर देन x है। चलो सुनने में कुछ गलत नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आई हैव 20 रुपीज लेस देन व्हाट यू हैव, मेरे पास आपसे 20 रुपए कम है, तो यू कैन रिवर्स द स्टेटमेंट एंड से कि आपके पास मेरे से 20 रुपए ज्यादा है। रुपीस के फॉर्म में बेटा ये सुनने में सही होता है, बट परसेंटेज में ये लिखना, ये हाईलाइट करना, ये समझना है। परसेंटेज में परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इज नेवर सेम बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबरों के बीच में परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कभी भी सेम नहीं हो सकता। क्यों, समझो। आपने जब ये कैलकुलेट किया बेटा तो आपका बेस y था, आप y से कंपेयर कर रहे थे तो 20% आया। अभी आप सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे हो, x से कंपेयर कर रहे हो, x कितना बेटा 120, तो परसेंटेज 25 आया। यहाँ एक और चीज लिखनी है आपको, एक और चीज सीखनी है। और मैं आपको ना कैट के 2003-2004 के क्वेश्चन करके दिखाऊंगा बेटा वर्बली, जो चीजें सिखाई जा रही है ना, मैं आपको विद एग्जांपल दूंगा कहाँ काम आया था। लैंग्वेज सुनना, लैंग्वेज क्या है मेरी। अगर दो नंबरों के बीच में आप y से लेके x गए और x से लेके y आए, कैन आई से
आपने दो चेंज किए बट दोनों का इफेक्ट जीरो है, y से गए और वापस आए, द इफेक्ट इज जीरो, इन दैट केस द परसेंटेज इंक्रीज वैल्यू इज ऑलवेज मोर, इंक्रीज वैल्यू इज ऑलवेज मोर देन डिक्रीज वैल्यू। ये लिख लो बेटा, ये चीजें, ये चीजें आपको वैसे ही एजुकेटर और ट्रेनर बता पाएंगे जिनको पता है एग्जाम में क्या रहा है, हर साल एग्जाम लिख रहे हो और उनको पता है क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं एग्जाम्स में। लैंग्वेज क्या थी मेरी, अगर कोई भी चेंज नहीं है, इफ देयर इज नो चेंज द परसेंटेज इंक्रीज इज ऑलवेज मोर देन परसेंटेज डिक्रीज। ये लिखनी है चीज बेटा, ये वाली। आप अपने फ्रेंड से पूछो ना, चीज नहीं पता होती लोगों को, हाँ लेकिन आप एक बार बताओ कि हाँ यार ऐसा तो होता है, एक बार तो सही बोल रहा है। नहीं, थ्योरी के फॉर्म में क्यों नहीं सीखी आपको, सीखना है मेरी सब चीजें। नोट्स बनाओ बेटा, मैंने आपसे फिर से क्या बोला, अभी ये वाले नोट्स तो आगे दूसरे नोट्स बनाएंगे आप पर। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ, हमने परसेंटेज बेसिक्स शुरू किया, परसेंटेज क्या होता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, परसेंटेज एज अ कंपैरिजन, फिर 4 स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस। अब मैं आपको ना जादू दिखाता हूँ, ये आगे आप और पिकअप करेंगे, आगे का मतलब बेटा, कभी भी 2 नंबर अगर आपको दिए और परसेंटेज की कोई कैलकुलेशन हो, कोई भी, अगर आपको लगता है ना, अगर आपको लगता है कि इनका रेशो निकालना पॉसिबल है, रेशो पहले निकाल लो, तो 4:5, जो आंसर आपका 120 150 से आएगा वो 4:5 से भी आएगा। देखो बेटा, अगर आप जानना चाहते हो y कितना ज्यादा है x से, लैंग्वेज y कितना ज्यादा है x से, तो y एक ज्यादा है, देन व्हाट, देन x, तो 1/4 इज 25%। यहाँ तक आपकी तैयारी मुझे लेकर आनी है, आई नीड टू ब्रिंग यू गाइस टू दिस लेवल। अगर आप ये जानना चाहते हो कि x कितना छोटा है y से, तो x छोटा है 1 यूनिट, किससे, y से, y कितना बेटा 5, तो इंटू 100। देखो आपने हमने जो ऊपर कैलकुलेशंस करे एग्जैक्टली यही है, मैं यहाँ पर सिंपली रेशो से कर रहा हूँ, तो ये स्पीड ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी। तो आई विल लीव यू गाइस विद द होमवर्क, अगली बार जब हम मिलेंगे कल तो होमवर्क से शुरू करेंगे बेटा। आपका होमवर्क ये है, एवरी बैच गोज थ्रू ऑल दिस, सबको पढ़ाता हूँ मैं ये सब चीजें। आपका काम बेटा ये है कि 100 को डिवाइड करोगे आप 1 से, 100 को आप डिवाइड करोगे 2 से, 100 को आप डिवाइड करोगे बाय 3, बाय 4, बाय 5। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बेटा अगर आपको टाइम लगता भी है ना, आई थिंक ये मेरा ऐप क्रैश होने वाला है, आई थिंक ये रीस्टार्ट होने वाला है। 100 को आप डिवाइड करोगे, चलो कोई नहीं, डेली हाफ एन आवर में आपके लिए लाइव आऊंगा बेटा, डेली हाफ एन आवर आप और हम यहाँ पे पढ़ेंगे, थ्योरी करेंगे। तो आई एम क्लोजिंग सेशन फ्रॉम माय साइड, वैसे भी वन नोट ऐप क्रैश हो गया, रीबूट होगा। तो मैं आपसे कल मिलता हूँ, फ्रेंड्स को बताओ, लिंक शेयर करो, डेली एक्सेप्ट फॉर सैटरडेज, बाकी रोज आपको पढ़ाऊंगा लाइव यहाँ पे यूट्यूब पे। वेरी गुड।